Good morning, Bachu. So we are going to discuss the current LCT JEE Main 2024 PYQ Apple Shift Part 2. Part 1 already कर चुके हैं. एक Part 2. बाकी बचे से around 12 or 13 questions. We'll discuss those things. Okay, let me finish off. Let me start them. Two wires in B are made up of same material and have same mass. Wire A has radius and wire B has the directions of wire B, the directions of wire A. दोनों का same material, लेंथ अलग है, रेडियस भी अलग है, and mass and density same. Two wires in B are made up of same material and same mass. Then दोनों का वॉल्यूम तो एक ही रहेगा. रेडियस एक का 4 मिलीमीटर है, एक का 2 मिलीमीटर है. मास एंड एमडी. तो दोनों का कितना हुआ वॉल्यूम? L1 वॉल्यूम सेम because mass density equal to mass by volume. Density equal to mass by volume. So therefore V1 equal to V2. So pi R1 square L1 equal to pi R2 square L2. R1 square radius 2 millimeter. 2 milli whole square इसका L1. R2 square 4 millimeter. 4 millimeter square L2. L2 का वैल्यू L1 by 4. रेजिस्टेंस कितना हुआ? R1 इक्वल टू रो. सेम मटेरियल, रो सेम रहेगा. L1 by R1 square. R2 equal to rho L2 by R2 square. So R2 is equal to R2. इसका रेशियो ले लेंगे. R2 by R1 is equal to will be L2 by L1. R1 by R2 whole square. L2 by L1 1 by 4. R1 by R2. R1 का रेडियस है 2 मिलीमीटर, इसका 4 मिलीमीटर. मिली गेट कैंसल सर. आई थिंक सिंपल कैलकुलेशन. डेफिनेशन बेस्ड. ये तो हुआ 1/8. R2. R1 का रेजिस्टेंस कितना है? 2. The resistance of wire है. The resistance of wire B is 2 ohm. इसका 2 ohm है क्या? थोड़ा वायर एज रेजिस्टेंस यहाँ पे हम अलग ले चुका हूँ. वायर ए एज रेडियस 2 मिलीमीटर. द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी इज 2. वायर ए का रेजिस्टेंस कितना, रेडियस कितना है? 2 है. L1 equal to 4L2. R1 by R2. R2 by R1 हम ले चुके हैं. So L2 by L1 R1 by R2 whole square. L2 का रेजिस्टेंस कितना है? L2 by L1. L2 by L1 is 1 by 4. R1 2 मिलीमीटर होल स्क्वायर एक बोल चुका हूँ. 1 by 2. 1 by 16 होगा. This will be 32. I think simple definition. यहाँ पे मेरे को कुछ पढ़ाने के लिए भी ज्यादा कुछ भी नहीं. The basic definition R equal to rho L by pi R square. वायर बोले तो
Sir, what is the shape? Wire will be in cylindrical only, not any other shape. This is very simple idea you should remember. When we say wire, wire will be cylindrical. Fine. By default, you should assume that one. The only thing which you should be little bit alert. Next question ले लेंगे. Electric bulb rated 200 or 50 watt. So power is equal to maximum power equal to Vm square by R. 50 equal to 200 square by R. R equal to 4 into 10 to the power of 4 by 50. 4 into 10 to the power of 3 by 5. Four hundred into 10 to the power of 5, ये हुआ 800 ohm. The power dissipation of the bulb will be is equal to 100 volt supply अगर आप रखे तो this one. So this will be 100 square 100 into 100 by 800. 100 by 8. 100 by 8, 50 by 4, 25 by 2. 12.5. Sorry. 12.5 watt. There's a power dissipated. Okay, sir, like a दो power क्या है सर? Like a power dissipation एक maximum power. There's a maximum power. कितना maximum power? 50 watt. जब आप इस बल्ब को 200 वोल्ट वोल्टेज अगर अप्लाई करें तो पावर डिसिपेशन इन इट विल बी मैक्सिमम. इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. अगर आपको रेजिस्टेंस पता है और आप जितना वोल्टेज आप लगा रहे वो पता है तो देन यू विल गेट द पावर डिसिपेशन. कितना पावर डिसिपेशन कितना है? 12.5 वाट. दिस इज लेस देन wattage power. So definitely what we get here, PD less than PM. So power dissipated will be definitely less than maximum power rating and the bulb is safer. अगर power dissipated greater than maximum power rating, then the bulb water will burn out or will get damaged. Simple ideas. Bulb series parallel एक बार रिवाइज कर लो. ये थोड़ा little bit you can say difficult question. Very rare in JEE Mains. एक resistance के बारे में इतना थोड़ा lengthy question पूछा है, but it's manageable. Not that very tough. Less time will be manageable. तो यहाँ पे हर एक का साइड का रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम है. जैसे क्यूब ये जो 12 साइड्स है ना, इसका हर एक का साइड का रेजिस्टेंस कितना? 2 ओम है. बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड हियर between A and C. The voltage difference between E and F is asking. E and F यहाँ पे नीचे इसका E and F. यहाँ पे हम करंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यहाँ पे करंट फ्लो होगा I. These two are similar branches and similar junction. यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा I2. यहाँ पे आके करंट will get divided I2 by 2, I2 by 2, I2 by 2, I2 by 2. This will be I2. ये हो गया I1. ये हो गया I1. फाइन. नो यहाँ पे हम ये जो करंट आई फ्लो हो रहा है
then current I1. यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I2, I2 by 2, I2 by 2. ओके, ए हुआ, ओके, इसका वैल्यू हुआ कितना, I1 एंड I1. तो करंट इस दोनों ब्रांच में एक करंट फ्लो नहीं हो रहा है. द रीजन फॉर दैट, B and D are at same potential. Similarly, E and G are at same potential. So इसके वजह से, so what we can write, BE equal to VE, BD equal to VG. You can solve this by many methods. सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं like करंट वहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है? There's one very simple question आप मेरे को पूछ सकते हैं. I'll give a sufficient proof. इसको हम प्लेन डायग्राम बना देंगे. हम जो यहाँ पे करंट फाइंड आउट कर रहे हैं, we are connecting, this is A, this is C. Okay, fine. और A हुआ B, A हुआ D, BE, A हुआ G, F G H. Yeah, fine. करंट इन ब्रांचेस में करंट नहीं फ्लो होगा, फ्लो नहीं होता है. और हम जो सेल कनेक्ट कर रहे हैं, सो वो सेल यहाँ आता है, A to C. फाइन. तो अब तो लेट इट इजी एवरीवन. थोड़ा बहुत मुश्किल सवाल है. तो यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है. इट विल ब्रांच आउट I1 एंड I1. यहाँ पे I2 करंट, A ब्रांच होगा I2 by 2, I2 by 2, फिर I2 by 2, I2 by 2, I2, I1, I1, this is I. Okay, this is current.
ओके फाइन. हाँ, इससे मेरे मेरे पास इससे ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक्चुअली इस डायग्राम में वेरी डिफिकल्ट जो मैं लिख रहा हूँ, ये सब लिख रहा हूँ वेरी डिफिकल्ट. यहाँ पे आपको वेरी इजीली गेट इट. potential at B and E are same. Potential at all these are equipotential directly. Potential at B equal to E equal to G equal to D. The voltage difference between E and F पूछ रहे हैं. तो इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे हम. अगर आप ये रेजिस्टेंस रिमूव कर दिए तो ये यहाँ से निकाल देता हूँ. ओके नो, एडजस्ट कर लेंगे. नो, let me explain this in detail. So this condition is very important. हम जो अब सॉल्व कर रहे हैं, this is very important, this idea. सर आप कैसे लिख सकते? If you draw an perpendicular line about which what happened, the current is distributed symmetrically, then all the points which lie on this bisector perpendicular line, they'll be at same potential. This is one basic condition. Then we can remove this. Okay, then find out the equivalent current very easily. The voltage difference between this, जो भी यहाँ पे हम 6 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम एंड 2 ओम. इसका रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम 2 ओम. I think now we can manage with simple series parallel. इसका टोटल 6 वोल्ट 4 ओम. इसका रेजिस्टेंस कितना? 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम. ये कितना हुआ? 2 ओम 2 ओम 4 ओम 4 ओम एंड दिस 4 ओम 2 ओम. और टोटल इसका टोटल हुआ 6 ओम. इसका टोटल हुआ 4 ओम. तो कितना ड्रॉप कितना है? सो 6 ओम. ये जो 6 ओम ड्रॉप है, ये 6 ओम कैसे बना बोले तो इसका 4 ओम. ये येलो कलर भी डाल देता हूँ, तुम्हें इजी होगा. ये जो ग्रीन कलर का है, दिस विल बी 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम. यहाँ का दिस इज 2 ओम. ये वाला 2 plus 2 4 4 and this is 4 parallel. This will be 2 and this will be 2, so 2 2 2. Then so इसका 6 वोल्ट आप यहाँ पे डाल रहे हैं. so कितना वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा? 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट. so यहाँ पे ड्रॉप कितना है? 2 वोल्ट है. कितना ड्रॉप यहाँ पे जाएगा? 1 वोल्ट. so what is the potential? EF will be 1 volt. Fine. This is a basic idea. It's lengthier. Definitely it's lengthier in term. One very rare you'll get a question like this. And sir, ऐसे tough question आते बोलकर सभी ऐसे tough questions practice करना very dangerous. It's a very rare, like 1% chances. Very rare. To measure the internal of battery, potentiometer. Potentiometer out of syllabus. I'll remove it. Not needed.
Water boils in an electric kettle in 20 minutes after being switched on. Using the same main supply, the length of heating element should be times of its initial length if the water is to be boiled in 50 minutes. Increase to, decrease to बारे में पूछ रहे हैं. Something electric kettle, इसका एक length है. We applied some voltage, potential drop. इसका radius भी हुआ. Twenty minutes after being switched on, using the same main supply, the length of heating element should be signal if the water to be boiled in 15 minutes में इसको boil on same voltage supply. So इसका resistance heat water H is equal to delta T equal to V square by R. Delta T1. The amount of heat has to be same. So इसका H by delta T2 equal to V square by R2. If water to be boiled in 15 minutes. So जिसका उसको जो heat, the amount of heat चाहिए वो तो that will remain same because from calorimetry Q equal to ms delta T. जितना heat चाहिए वो तो same है. Fine. So अगर आप time change करें, the resistance changes, the time will change. So therefore now this will become delta T1 by R1 should be equal to delta T2 by R2. 20 minutes. 20 minutes by resistance R1, delta T2, 15 by R2. R1 by R2 equal to 4 by 3. तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू L1 रो L1 by A रो L2 by A. R1 by R2 L1 by L2. 4 by 3 equal to L1 by L2. L2 का लेंथ कितना हुआ? L2 इक्वल टू L2 का लेंथ कितना हुआ? Will be 3L1 by 4. और ये तो डिक्रीज हुआ ना? This is one basic idea of the electric kettle. This has to be same. जो amount of heat चाहिए वो तो same है. The amount of heat supplied per unit time will become power. That power is supplied by the electrical resistance. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. और एक क्वेश्चन है हीटर के बारे में. It is designed to operate power of 1000 watt. यहाँ पे हीटर कॉइल है. There is a heater coil. 100 volt line. This 100 volt line. It is connected in combination with a resistance of 10 ohm and the resistance to under root means as shown. For the heater to operate at 62.5 the value of R. इसका value of R कितना? 62.5. So power dissipation, यहाँ पे power dissipation कितना है हीटर का? Power dissipation है 62.5 watt. इसका resistance of heater find out करेंगे. That information
डिजाइन टू ऑपरेट विथ पावर ऑफ 1200 वैट। ओके सर, यहाँ पे दोनों दोनों पावर है, यहाँ पे एक 1000 वैट। इट इज डिजाइन टू ऑपरेट विथ पावर ऑफ 1000 वैट। यहाँ पे आप अगेन आप यहाँ पे क्वेश्चन पे दोबारा फॉर द हीटर टू ऑपरेट 62.5 वैट। सर ये दोनों का मतलब दिस है मैक्सिमम पावर। अगर पावर डिसिपेशन अक्रॉस हीटर दिस है पावर रेटिंग। अगर पावर डिसिपेशन अक्रॉस हीटर इज ग्रेटर देन दिस, ये जो हीटर है इट जल जाएगा, इट विल गेट बर्न आउट, इट विल गेट डैमेज, ये खराब हो जाएगा। देन so what will happen is what will be the value of r? ये वैल्यू ऑफ आर हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं सो दैट कितना पावर डिसिपेट हो रहा है 62.5, बट मैक्सिमम कितना हो सकता है 100 वैट, 1000 वैट। देन सर व्हाट इज दिस 100 वोल्ट लाइन? सो इसी हीटर कॉइल इसका एक रेजिस्टेंस रहता है आर एच। अगर हम 100 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो अक्रॉस इट, देन इसका पावर मैक्सिमम पावर कितना जनरेट होगा 1000 वैट। दिस अ मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड, दिस अ मैक्सिमम वोल्टेज। इससे हम वोल्टेज एक फाइंड आउट करेंगे, वी एम स्क्वायर बाई आर एच। पावर डिसिपेटेड हाउ मच 1000, 100 स्क्वायर आर एच। सो आर एच का वैल्यू कितना हुआ 10 ओम। यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इसका 10 ओम, आर का वैल्यू ये। सो यहाँ पे बाकी बचे 100 वोल्ट। ये भी 10 हो। सो नो पावर डिसिपेशन यहाँ पे कितना 62.5 वैट। मैं कैलकुलेट द ड्रॉप हियर, इसका ड्रॉप कितना कितना रहना चाहिए। सो 62.5 equal to little bit lengthy, this is also very lengthy, this is also lengthy. Power dissipated equal to potential drop developed across the heater coil by resistance. Resistance of heater is how much 10 ohm. So 62.5 V naught square RH will be 10. V naught square equal to 625. V naught equal to 625 volt. कितना वोल्टेज हम अप्लाई कर चुके हैं 25 वोल्ट। और तो 100 वोल्ट, इसमें से 25 वोल्ट ड्रॉप यहाँ पे कितना ड्रॉप यहाँ पे 75 वोल्ट। देन रेजिस्टेंस कितना हुआ इसका आई। सो वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू हाउ मच 75/10, 7.5 एम्पियर। यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है I1। I1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। I1 का वैल्यू विल बी V0/10, 25/10, 2.5 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर। इसका वैल्यू ऑफ आर पूछ रहे हैं। सर आप यहाँ पे 5 एम्पियर कैसे लिख रहे? सो लेट दिस बी I2। यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे हम। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I का वैल्यू कितना 7.5 एम्पियर, I1 I2। I1 इक्वल टू 2.5, ये हुआ I2। I2 का वैल्यू हुआ कितना 5 एम्पियर। देन R इक्वल टू V0 स्क्वायर, okay this one, power dissipation, Ohm's law, V0 equal to
I2 इंटू आर. वी नॉट का वैल्यू कितना है? वी नॉट 25. I2 का वैल्यू कितना? 5. आर इक्वल टू 5 ओम. हाँ, लिटिल बिट लेंदी. थोड़ा थोड़ा सीरीज पैरेलल, नथिंग बट पावर रेटिंग एंड सीरीज पैरेलल. अगर आपको ये दोनों थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे तो आप इसको इजी से कर सकते हो. पावर रेटिंग का पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम पावर रेटिंग, पावर डिसिपेशन, देन बाकी सब भी सीरीज पैरेलल. सर विल दे आस्क, सो लाइक जनवरी 2024 में ले लो. ये दो तीन चार क्वेश्चन ही टफ है. कितना टोटल कितना? 24 प्लस 22, 48 क्वेश्चन थे. 48 क्वेश्चन, चार क्वेश्चन ही टफ है. बाकी बचे सो 44 क्वेश्चन देर वेरी इजी. 2000 complete 2024. Still the basic idea is same. Huh? Now again galvanometer. A galvanometer coil of resistance 200 with a full scale deflection of 20 microampere. तो galvanometer, ये वो हमारा galvanometer, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 200 ओम. इसको एमीटर करने के लिए the value of resistance to be added to use it as an emitter 0 to 20 milliampere. यहाँ पे कितना मैक्सिमम करंट? 20 milliampere फ्लो हो रहा है. इसका वैल्यू ऑफ एस कितना है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यहाँ पे आई जी का वैल्यू 20 माइक्रोएम्पियर. बाकी बचे सो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है. प्लस माइनस इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई जी इंटू एस. तो आई जी का वैल्यू 20 इंटू 10 to power of minus 6. गैलोमीटर रेजिस्टेंस 200, 20 मिली एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर. ए मिली एम्पियर है मैक्सिमम रेंज. 20 इंटू 10 to power of minus 3 Ig equal to शंट वैल्यू. सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 0.2 ओम. तो 10 to power of minus 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. 10 to power of minus 6, 10 to power of minus 3 better will get cancelled. We'll get around 0.2 ohm, very small resistance. Solving this simple formula once again. अगर ये फॉर्मूला याद रहे तो ये डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है. डायरेक्टली थ्रू फॉर्मूला कैन मैनेज. अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता एटलीस्ट बेसिक का, ये वो गैलोमीटर. अगर आप इसको एक लो रेजिस्टेंस वैल्यू इन पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो एक गैलोमीटर हो जाएगा एमीटर. तो एमीटर बोले तो दिस एवरीथिंग इज एमीटर. गैलोमीटर इन पैरेलल विद शंट एंड एमीटर रेजिस्टेंस कितना है? GS by G plus S. वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है? G plus RS. हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसी को हम शंट बोलते हैं. वंस अगेन एक एमीटर वोल्ट मीटर रिवाइज कर लो, कॉन्सेप्ट विल बी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. यहाँ पे कनेक्शन नहीं है. दिस सिंबल यहाँ पे अगर ऐसे दिए तो दिस इज नॉट कनेक्टेड. ओके फाइन. यहाँ पे हम थोड़ा इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स ले लेंगे. P1, P2, P3, P4. They are connected by wire. One line connected and ये वाला यहाँ पे connected है.
रीड्रॉ कर लेंगे, तो ए हुआ ए, बी, P1, P3, P4 हुआ एंड ए, P4, P1, P2. From A to P1, there is a 6 ohm resistance. P1 to P4, 15 ohm. फिर P4 to P4 तक 8 ohm, यहाँ पे 10 ohm, 5 ohm, 8 ohm और A हुआ 7 ohm. B से P3 तक, B से P3 तक 8 ohm है. कितने कितने रेजिस्टेंस हुए टोटल, काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे कितना 6 हो. अभी 2 लाना है बाकी. कौन से रेजिस्टर्स मिस हुए यहाँ पे. फ्रॉम ए टू P1, P1 टू P4, P1 टू P4 10 5 है यहाँ पे. P1 टू P2, P1 टू P4 10 5 है. P4 टू P2 और P3 टू P2 4 and 11 है. वो भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. P3 टू P2, P3 P2, P2 से 11 11 11 11 हो और ए वाला 4 हो. सिंप्लीफाई करो ना. ए जो ग्रीन कलर का है P3 P4 यहाँ पे लगा रहा हूँ. P1 P2 common. So what is the basic idea? Equipotential points. Whenever two lines in a circuit, when 2 points are joined by a wire, they'll be at same potential. Make them common. And there's a concept of equipotential. Why, sir? We are removing those wires. I'm not removing. If two wires are connected by a, if 2 points in a circuit connected by conducting wire, account electrostatic conductor is equipotential, so therefore the potential of P1 P2 should be same. उसको common point बना दो. Similarly P3 P4 एक conducting wire है. What is the symbol, sir? ये तो jump का symbol है. तो potential P3 P4 will be same, so make them common. और बाकी circuit redraw कर दो और यहाँ पे काउंट कर दो कितना रेजिस्टेंस है. 1 2 3 4 5 6 7 8 रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको redraw करना है. So this is a P1, then this is 8 ohm. इसका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस 15 ohm, 15 ohm, 15 ohm. This will be 5 ohm. इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, will be 8, 15 ohm, 15 ohm, 15 ohm, 5 ohm, 8 ohm, 19 ohm. Total RAB equal to 19 ohm. Last वाला questions. The current flowing through 1 ohm resistance. 1 ohm कहाँ पे है? 1 ohm यहाँ पे. कितना करंट फ्लो रहा है? Now he is पूछेगा. He is asking.
क्या व्हाट इज द मेथड? 5 वोल्ट यहाँ पे सेल है. एंड वन मोर थिंग, you can use some थोड़ा सर्क्यूट ड्रॉ करेंगे. लिटिल बिट थोड़ा बड़ा बड़ा डायग्राम चाहिए. इस तरह ले लेंगे. We'll see what are the different methods available. यहाँ पे रेजिस्टर्स. नो, इसका वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट. इसका वोल्टेज 5 वोल्ट है. ये वाला 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम. विस्टोन नेटवर्क यहाँ पे हम नहीं ले सकते. अगर यहाँ पे गैलोमीटर रहे तो ओके फाइन, कुछ कर सकते थे हम. यहाँ पे गैलोमीटर नहीं, ये तो सेल है, सो सेल को हम रिप्लेस नहीं कर सकते. ओके फाइन. नेक्स्ट सर. ओके देन आप क्या करने वाले हैं? तो पहले इट्स वेरी सिंपल. अगर रियली इफ यू आर लूप करंट्स I2 I3 और बाद में पोलैरिटी दे दो. व्हाट आर द पोलैरिटीज? पोलैरिटीज विल बी यहाँ पे करंट एंटरिंग लिविंग, करंट एंटरिंग लिविंग, यहाँ पे करंट एंटरिंग एंड 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 लिविंग. Write all the loop equations. 3 equations, they are known, solve it. Sir, lengthy. No other choice. अगर आपके पास टाइम रहे तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. अगर आपके पास टाइम रहे तो देन कम आउट, फिनिश. और देयर इज नो अदर चॉइस. तो लूप इक्वेशन लिख रहा हूँ. 10 minus 4i1 minus 2i1 minus 2i2 minus i1 minus i3 0. ये वाला. देन बाद में ये वाला लूप इक्वेशन. ये जो लूप इक्वेशन हम लिखे थे, दिस द पाथ. अब इसका लूप इक्वेशन लिख देंगे. अगेन 10 plus 10 minus 4i3 plus 2i3 plus 2i2 plus i3 minus i1 0. ओके फाइन. इसका यहाँ पे प्लस 5 ए लूप में लिख देंगे. 5 minus 2i2 minus 2i1 minus 2i2 i3 equals 0. ये वाला लूप इक्वेशन, दिस वन आई एम राइटिंग इट. ओके फाइन. थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहां से कहां लूप इक्वेशन लिख रहे हैं. येलो वाला पाथ, उसके लिए ए लूप इक्वेशन है. और ये जो ब्लू कलर का पाथ है, दिस इज फॉर दिस लूप. तीनों इक्वेशन से सॉल्व कर दो और द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 1 ohm रेजिस्टेंस इज कितना? I1 and I3 रिजल्टेंट ऑफ दिस टू. दिस अ लूप मेथड. दिस अ बेसिक लूप मेथड. सर और कौन सा एनी मेथड है? ओके देन दूसरा नोडल एनालिसिस.
यूजिंग नोडल एनालिसिस। यूजिंग नोडल एनालिसिस हम क्या करते हैं बोले तो यहाँ पे वोल्टेजेस डिफाइन कर लेंगे। 5 वोल्ट, इसका तो हुआ 0 वोल्ट। देन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता नहीं, एक्स, मतलब कि इसको सी बोल दीजिए और ए। देन राइट इक्वेशन, यहाँ पे नोडल इक्वेशन यहाँ पे हम लिख रहे हैं सी माइनस 5/2 प्लस सी माइनस 0/2 सी प्लस 10 सी प्लस 10 माइनस a/1 इक्वल टू 0। a माइनस 5/4 a माइनस 10 माइनस c/1 a माइनस 0/4। कितने अननोन्स है ए एंड सी? अगर आपको ए एंड सी पता रहे तो देन यू कैन इजीली टेल व्हाट इज दिस करेक्ट। सर आप ये सब कहाँ से लिख रहे हैं? व्हाट इज द मीनिंग? हमें यहाँ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल 5 वोल्ट, तो 5 एंड 0 एज्यूम कर रहे हैं। इसका पोटेंशियल हमें पता नहीं, यहाँ पे सी एंड ए हम एज्यूम कर रहे हैं। देन आई एम राइटिंग द सेम केवीएल ओनली। यहाँ पे हम केवीएल ही अप्लाई कर रहे हैं। So the net current entering the junction, the net current entering the junction at C should be equal to net current leaving the junction. हमें पता नहीं कौन सा current enter हो रहा है या leave हो रहा है। So इसलिए what we are doing is like nodal analysis. We are defining the nodal potentials. This will call node. C minus 5/2. This will be the current here. C minus 0/2. This will be current in this branch. C plus 10 minus A by 1 ohm. This will be the current. यहाँ पे कौन सा करंट एंटर हो रहा है, कौन सा लीव हो रहा है पता नहीं, बट algebraic sum of all currents is equal to 0. This is algebraic sum. Similarly, a minus 5/4, a minus 10 minus c/1, a minus 0/4, इसमें से कौन सा करंट यहाँ पे एंटर हो रहा है और कौन सा करंट यहाँ पे एंटर हो रहा है और कौन सा लीव हो रहा है हमें पता नहीं। So this is the algebraic sum. The algebraic sum currents at a point equal to 0. यहाँ पे कितने अननोन्स है आपको? ए एंड सी, टू इक्वेशंस, टू अननोन सॉल्विंग। आपको पोटेंशियल एट ए एंड सी मिलेगा। वंस आपको पोटेंशियल मिलने के बाद इक्वेशन लिख दो, ए माइनस 10 माइनस 1 इंटू आई, पता नहीं, वी आर मूविंग फ्रॉम आई टू लोअर पोटेंशियल, लोअर टू हायर पोटेंशियल। यहाँ पे मैं माइनस हाई लिख रहा हूँ। सो आई एम एज्यूमिंग दैट current will flow towards right, minus C equal to 0. Substitute A and C. If you get I positive, what you assumed is right. If you get I negative, change the direction. But he's asking only magnitude. Really very lengthy problem, not tough, lengthy problem. Nodal analysis, loop current method. But sir, nodal analysis तो JEE means के लिए very rare is asking loop current method. अगर आपको nodal analysis याद रहे तो use this one. Are you getting? So again, don't prepare nodal analysis. अगर आपको लूप करंट मेथड अगर याद रहे तो यूज दिस वन, एंड अगर आपका टीचर नोडल पढ़ाए तो देन गो फॉर दिस, अदरवाइज लिव इट। दिस लूप करंट मेथड इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर इज आर। ये तो सीधा आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। यहाँ पे कुछ कुछ तो सिमेट्री नहीं तो सीरीज पैरेलल के, वी शुड टेक हेल्प ऑफ दैट वन।
Any method? सर इतना बड़ा सर्क्यूट एग्जाम में पूछ सकते? It's possibility. It's not something very tough. Not very tough. करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे. यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट ये यहाँ पे ब्रांच हो जाता है. ओके फाइन. तो एक करंट यहाँ पे ऐसे गुजरता है और दूसरा वही करंट, उसका उसका वैल्यू, वही वैल्यू करंट यहाँ से गुजरता है और दूसरा करंट यहाँ से बिना ब्रांच के गुजरता है और दोनों कम, तीनों मिलके अगेन इट विल बिकम सेम करंट. इस ब्रांच में नो करंट, देयर नो करंट इन दिस ब्रांच. सर हाउ इट इज पॉसिबल? ये हम करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. आई दिस I1, ये हुआ I1, ये हुआ I2, सॉरी I1 एंड ये वाला हुआ I2 एंड I2 एंड ये हुआ I. तो नो रेजिस्टेंस इन दिस ब्रांच, नो करंट इन दिस ब्रांच. इसको निकाल देंगे हम. तो ये हुआ 2 ohm, 2R, 2R, 2R. That effective is again with the in parallel. So 2R, 2R parallel will simplify करेंगे. So this one will be 2R, 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 and this is R. So 2R by 3. So this will be 2R by 3, R and AR. So total R naught or R equivalent will be R plus 2R by 3, 8R by 3. So once again, so like what are the key important things? Ammeter, voltmeter, galvanometer, Wheatstone network, meter bridge, resistor in series and parallel, power dissipation means bulbs, ratings, ether coil, temperature quotient of resistance alpha. जो भी पूछ रहा है, this is the major area of asking. So some problems यहाँ पे last 3-4 problem मैं जो कर चुका हूँ, this is on and average like 27 और 22, 49 प्रॉब्लम में 4 ही टफ है, बाकी सब वेरी वेरी सिंपल है. और जो 4 प्रॉब्लम जो पूछ चुके, सो दे आर बेस्ड ऑन सम रेजिस्टेंस नेटवर्क. लाइक बहुत सारे रेजिस्टेंस देखे, उसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए. सो रियली लुक एट द परसेंटेज. ओनली आपका कितना मिलेगा परसेंटेज? ओनली देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 10%. नो मैक्सिमम व्हाट हैपन, दिस इज द बेट यू कैन डू इट. So these are the threshold areas: ammeter, voltmeter, galvanometer, Wheatstone network, meter bridge, resistor series parallel, power rating, bulbs, ether coils, temperature quotient of resistor. Series parallel is very very important. हर जगह में KVL, KCL, these are universal. So prepare well. You have very less time now. If you are choosing current intensity, revise this first theory, concepts, everything.
बाद में आप फॉर्मूला याद कर लो, देन यू कैन मैनेज एग्जाम वेरी इजीली. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, डू वेल. तो नेगला कौन सा तो एक नया चैप्टर पीवाई को कर लेंगे. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर ग्रेट सपोर्ट.